वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। अब हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता में है टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू मोहम्मद याह्या खान हु हैज़ बेसिकली वर्कड अवे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल। उनको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यू नो, एंड ही इज़ वर्कड विद वेरी रेप्यूटेबल कंपनीज हिमसेल्फ। एंड आज वो बैंक अल्फला के थ्रू हमारे पास आए हैं बात करने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बैंक अल्फला एक एक्चुअली कमर्शियल बैंक है जिसकी 1000 ब्रांचेस हैं एंड अबाउट 200 सिटीज़, राइट, इंक्लूडिंग यूएई, बांग्लादेश, बहरीन एंड अफगानिस्तान एज वेल। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग, सिक्योरिटीज़ और बाकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर और इस्लामिक एंड एसेट फंक्शनिंग के अलावा अब एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वजह से ख़ास हम आज एक सेगमेंट कर रहे हैं। इट्स बेसिकली अ फाइनेंशियल लाइफस्टाइल ऐप। तो अगर आप पहले ये ऐप यूज़ करते थे फॉर जस्ट ट्रांजैक्शन बेस्ड सर्विसेज, नाउ यू कैन यूज़ दिस ऐप फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल। एंड ऑन दैट नोट वी विल टॉक टू याह्या अबाउट इट। सो याह्या, सो दिस इज़ अ न्यू ऐप दैट लॉन्च हुई है, राइट, अल्फला की। आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बताएंगे टू द ऑडियंस के, इनको भी ज़रा लेमन टर्म में समझ आ जाए। जी श्योर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो जैसे आपने जिक्र किया इन द इंट्रोडक्शन के आज से पहले ना सिर्फ हमारी बल्कि तमाम हमारी एग्जिस्टिंग ऐप भी काफ़ी फेमस ऐप है एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज इट ऑन अ मंथली बेसिस, इंक्लूडिंग यू, यस, यू टेलिंग मी। एंड लेकिन अब हमने जो न्यू अल्फा, सो हम एंड बशमूल हमारे तमाम बैंक्स की ऐप्स प्राइमरीली, जैसे आपने कहा, ट्रांजैक्शनल ऐप्स थी जिसके अंदर आप किसी को पैसे भेज सकते थे या बिल जमा करा सकते थे। We thought कि now banking is not just about that, banking goes beyond it. So हमने अब इसको फाइनेंशियल लाइफस्टाइल ऐप के तौर पे एक नई न्यू अल्फा ऐप इंट्रोड्यूस कराई है जिसमें वो बेसिकली इट मैनेजेस योर फाइनेंसेस फॉर यू। सो इट कैन गिव यू द ऑप्शन टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स एज वेल एज बोरिंग। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस ऐप का फंडामेंटल डिपार्चर ये है। अच्छा, एंड हाउ इज़ इट हेल्पिंग in overall digitization of the economy as well? आपको लग रहा है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। and even if you look at the central bank's recent reports on payment systems, you'll see that digitization through the use of internet, I always say, data and internet is not limited to wherever banks can open their branches. So Pakistan में अगर आप, if you put all banks put together, there are less than 20,000 branches in Pakistan. That is not enough for the population that we have, and also उनका कुछ हद तक focus urban areas में. Yeah. Whereas internet doesn't know any boundaries. Internet is available everywhere. I think telcos have done good job in making internet accessible, 3Gs and 4Gs. So what digitization is, whether it's us or anybody else who runs their business on an app, they take advantage of the railroads of internet and data and make banking accessible to someone who otherwise doesn't have access. तो यानी कि आप लोगों का बेस भी बढ़ता है and you know the service is available to more people as well, which is amazing as well. तो इसका virtual debit card का आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे? This is something that was quite fascinating as well. Yeah, and we were also talking earlier about this shopping need. So देखें जो पाकिस्तान में there are around 2 million के करीब credit cards हैं and about 50-55 million के करीब debit cards हैं. So credit cards are very limited. Now credit cards give you a protection when you're shopping online through the schemes, as well as you have a certain limit on the credit that you have available. But given that I just said कि इतने credit card हैं नहीं, so people end up using their debit cards online. Now that's a dangerous thing to do, because that खुदा न खास्ता if somehow it gets compromised, although Pakistan में 3D secure आ चुका है अब, लेकिन international merchants ने 3D secure को off किया हुआ है, meaning you don't get a one-time passcode on your phone to enter on the website in order to complete the transaction. Even big retailers such as Amazon have turned it off because they think it adds friction to their process. And they say if something fraud happens, then okay, we'll bear it, right? They would bear it, but the person itne arse mein their jaan nikal jayegi uski, of course, right? So and somebody has just wiped your account clean. So virtual debit card हमारा ये है कि if you have an account with Alfalah and you have an app with Alfalah, you can create your own
e-commerce shopping card, which is what you're referring to as a virtual debit card. उसमें आप अपनी लिमिट खुद सेट कर सकती हैं, 5,000 रुपये, 10,000, 15,000. उसकी एक्सपायरी आप खुद यूज़ कर सेट कर सकती हैं. आप उसके यूसेज सेट कर सकती हैं कि आई वांट टू यूज़ इट वन टाइम ओनली और आई वांट टू यूज़ इट रिकरेंट. एंड व्हाट्स द प्रोसेस टू अप्लाई? आया, शुड आई गेट होल्ड ऑफ यू? आपके जाने से पहले ही पकड़ लूं आपको कि प्लीज मुझे भी कर दें? बिकॉज एक्चुअली देयर इज अ वेरी गुड बैंक, आई डोंट वांट टू नेम दैट बैंक ऑन एयर राइट नाउ. दुबई का बैंक है और उसमें इस तरह की एक सर्विस लॉन्च हुई थी विच आई थिंक वाज क्वाइट हेल्पफुल, बिकॉज वो 5,000 दिरहम की आपको लिमिट आप सेट कर लें और आपने जितनी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आप करें, स्काई इज द लिमिट. 5,000 में आप दुनिया खरीद लें. राइट. सो अच्छा, आपको इसके अंदर बेसिकली आप मुझे ये भी बता रहे थे कि आप इंस्टेंट लोन अप्रूवल भी करा सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दें. आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल. एंड दैट रिलेट्स बैक टू अस मेकिंग दिस ऐप अ फाइनेंशियल लाइफस्टाइल ऐप, जहाँ पे हम समझते हैं कि लोगों को सो ऐप क्या करती है, वो आपकी नेट वर्थ पहले कैलकुलेट करती है. वो दिखाती है आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपने अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए हैं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कितनी की हुई हैं. वो एक तरफ एसेट्स उठाएगी, एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ उठाएगी कि आपने क्रेडिट कार्ड पे आपका कितना बिल चढ़ा हुआ है, आपने अगर कोई गाड़ी का लोन लिया हुआ है तो उसका कितना है. और इसकी बेसिस पे वो आपको कहेगी कि रिजा, आप बाय द एंड ऑफ द मंथ are you going to be in surplus or deficit? If you're going to be in surplus, the app will recommend you ke, depending upon your financial history, whether you should invest in a 1 week investment or a 1 month investment or a 1 year investment. Achha. And similarly, if you're going to be in deficit, then it'll propose to you that we can offer you up to 7.5 lakh रुपए तक का cash loan if you want. So you can apply, you can click a button and you can get the loan. How interesting to say कि हम लोग अभी recently ही एक segment कर रहे थे जिसमें औरतें घर में पैसे कैसे बना सकती हैं और कैसे से. So I think this is something in line with what we were discussing. I'll definitely consider this. I think this is quite great. आप tap and pay का भी function मुझे explain कर रहे थे कि किस तरह काम करता है. जी. So it's like the Apple Pay concept. It's like the Apple Pay. Yes. So you gave a good example. Yeah. So tap and pay is literally just another convenience factor that, what digital banking is now doing the world over is it's reducing the number of instruments that you have to carry with you. Yeah. Right? We all started off with multiple instruments and then it's just reducing. So in the West, then it said, if you have a card, you don't even need to carry card with you because it's like one more instrument that you have to carry. So if you just tokenize your card or store it in simple layman terms in your app, then your phone becomes a tap and pay thing. So it's a similar thing here in Pakistan also. So you've launched it, you don't need to carry your card with you, and you can just tap and pay. The other beauty is, we were also talking in the break about, what happens if something does get compromised or if you're traveling and something is not working for you. On traveling, in fact, मैं वापस आके break से ज़रा अच्छे तरीके से traveling के बारे में बात करूँगी. I have some concerns about your traveling. Anyway, guys, हम जा रहे हैं एक short break पे. जब हम वापस आएंगे, हम अल्फाला की आपको थोड़ा और discuss करेंगे. Please don't miss out. It's something interesting. See you soon. Welcome back, guys. हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे मैं और याया कि what an amazing integration this has been today and what an amazing segment it has been today because I'm myself an Alfalah user और अभी ब्रेक में उन्होंने मुझे इतनी amazing functionality बताई है आपकी that I can't actually wait to use it and I've been actually wanting to buy an iMac and I want to make it very connectable for everyone who's listening right now. आप उनकी ऐप पहले अपग्रेड करें, आप ऐप पे जाएं, आप वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं आपको क्या चाहिए एंड यू कैन फाइंड सम अमेजिंग डील्स और आप इंस्टॉलमेंट्स पे पे कर सकते हैं. आजकल इतनी महंगाई है एंड इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी टू बी एबल टू डू दैट थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ डू इट. मुझे तो पहले क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ेगा याया बिकॉज आई डोंट यूज़ वन, राइट? अच्छा याया, आई नोटिस समथिंग एज वेल कि मैं जब स्टेटमेंट अपनी देख रही होती हूँ तो उसके अंदर अक्सर अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, तो मुझे अमाउंट देखना होता है कि अच्छा 5,000 है तो ड्राइवर को भेजा होगा, 8,000 है तो किसी और को भेजा होगा. So I believe you guys have changed the system as well. How? Yes, it's excellent because not just in Bank Alpha, if you look at any bank statement, it'll show you a dumb account number where you've received the money from or sent to. Now you don't know what that account number is. People hardly remember their own account number, let alone somebody else's. So one thing that this statement does is it now gives the names of the people you've received or sent the monies to. It would also show you the names of the bills that you have paid. So it'll tell you कि ये K Electric का bill था, ये Sui Southern Gas का आपने bill जमा कराया. And then that way, or you can also then tag that transaction yourself कि मैं इसके अंदर कोई description डालना चाहती हूँ. So you can say this is the money that I returned to my friend. अच्छा. X, right? All of those are then searchable fields. So you can search by name, you can search by description. You can categorize it कि मैं इसको किस bucket में डालना चाहती हूँ इस statement को. And above all, the beauty is
which I'm sure you also do that, कि आप जब किसी को कोई चीज़ भेजती हैं आप उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखती हैं और उसको भी भेजती हैं. Right? You keep a screenshot of the last screen. You don't need to anymore. When you go in this statement, even if it's as old as 5 years ago, you click on the transaction, it'll give you the receipt. अच्छा, तो वो receipt आप लोगों को भेजने के ये मैंने आपको पैसे भेजे थे इस ज़माने में भेजे थे. You don't have to keep storing it. So yeah, so it's by name, it's searchable, and it's a complete audit record. तो अच्छा comprehensive हो गया. आपने process tediousness थोड़ी process की कम कर दी कि ताकि एक नज़र में आपको नज़र आ जाए, टाइम वैसे ही नहीं होता, right? अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा Islamic banking option का भी बता रहे थे कि how is it that it's a Sharia compliant solution for us? Correct. So so right now from this one single app, which I think is a unique feature of this, at least in Pakistan, when you go in there, you download is a single app, and then depending upon your preferences, you can either open a relationship with our Islamic license, or you can open a relationship with the conventional. So you can open an Islamic account, you can open a conventional account, and then off you go. If you follow the Islamic, then your options change, your color schemes change, and what you see in the app changes. But if you go on a conventional, then it's a different thing. And then, for example, if you go into Islamic, actually the other beauty is if you have a conventional account, but if you wish to make, which is allowed, if you wish to make an investment into an Islamic instrument, you can do that. अच्छा, you can also do that. आप switch कर सकते हैं. You can switch only to the extent कि आप इधर से conventional से पैसे लेके Islamic profit earning के अंदर डाल सकते हैं. अच्छा. So yeah, so basically in summary, this app allows you to open whatever your religious preferences. ठीक है, that's perfect. So basically we've covered cut short. हम लोगों ने tap and pay discover किया, हम लोगों ने Islamic pay किया, हम लोगों ने ये देखा कि future updates जो जितनी भी नए features आएंगे उससे we can actually see कि statement के ऊपर नाम है, an amount है, right? Is there anything else you'd like to point out about the app? Because I think we've pretty much covered every good feature. कोई और ऐसी चीज़ जो I think someone who's maybe looking for installments पे कुछ लेना चाह रही हैं या कोई ऐसी benefit? There are two last things, if you allow me to. One is just before going to break, we were talking about the shopping part and going international. Yes. And one of the features that this app is that it allows you in the app to open and shut your cards to be used at any channel, and that channel could be an ATM channel, it could be an e-commerce channel, it could be a POS channel. Interesting. Right? So you can turn it on and off. अच्छा. Right. You can also turn it on and off for international also. अच्छा. हाँ, yeah, personal experience. So you can do that. So yeah. So I have known many of the customers and the users who keep it off all the time, their card, and when they go on a terminal, they turn it on. हाँ. Yes, so उस वक्त कर लेते. तो ये आपने अच्छा बताया क्योंकि मैं अक्सर जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मेरा यहाँ पे तो बंद ही होता है, पर ट्रैवल करते हुए कभी-कभी मुझे थोड़े से इश्यूज फेस होते हैं कि मैं जाके खुलवा लूँगी अपनी ऐप, बट ट्रैवल में काफ़ी दफ़ा थोड़े बहुत होते हैं इश्यूज फेस के यू हैव टू काइंड ऑफ इन्फॉर्म देम कि अब आप मेरा खोल दें फिर बंद कर दें, बट ओवरऑल आई थिंक इट वर्क्स फाइन. Last piece, if you allow me to, was just on this assets and liability part, because that's the big piece of it. We've talked about most of the other stuff here. कि आप इसके ज़रिए से जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम करें, आप सेविंग्स कर सकते हैं, आप हलाल मुनाफा अर्न कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स इनटू म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इनटू सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ख़रीद सकते हैं, एंड आप बोरिंग्स कर सकते हैं इसके साथ. अमेजिंग. ओके याया, थैंक यू सो मच. आई थिंक हमने इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया कि आप इस नई ऐप से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई रियली अप्रिशिएट. आई होप आप लोगों ने इससे कोई इंसाइट्स ली होंगी और रियलाइज़ किया होगा कि ये ऐप आपके लिए अब कितनी यूजफुल हो सकती है. सो यू मस्ट चेक इट आउट बिकॉज आई एम गोना बी अपडेटिंग माइन राइट नाउ विद याया. कहीं नहीं जाएगा. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वी हैव अ न्यू गेस्ट ऑन सेट. सी यू सून.